Thank you, guys. Thank you for coming. I was just saying, Karan, that we'd forgotten to celebrate music this way. बहुत बहुत साल पहले यहाँ पर ही यही होटल में और इर्द-गिर्द में जहाँ होटल हम बड़े-बड़े म्यूजिक लॉन्च करते थे. There were people, there were hundreds of people. You'd have a drink, you'd celebrate it. And I think over the last many years, including thanks to the pandemic, I think we've forgotten to come together to actually celebrate music. So thank you, everyone, members of the press for being here. Thank you, Karan. Thank you, Laksh. Thank you, Javnosin. Thank you, Erica. Thank you, my team. It's important that in a country like ours, storytelling is at the heart of everything. हम हर चीज़ में we tell stories. And I think we are privileged today to be here with the master storyteller, somebody whose stories, I mean, I don't want to say I grew up listening to because I'm pretty much his age, but he truly knows how to tell stories. And we are on the other end of it where we like to tell stories through music. My number one, first of its kind, firstborn label, which is Viral Originals, has been, I think, what now we are begun to call a pioneer in this business because we were the ones who said, look, Bollywood is great, and Bollywood is great. By the way, we've got the second largest Bollywood catalog in the country, so we know from the Sholays to, I don't know, hundreds of movies of the past, belong to our catalog. But today's storytelling is about telling stories with music outside the world of Bollywood as well. And that is something that we specialize in. It's something that we have done quite well over the past few years. We started this journey in early 2018. I remember sending Karan a text the day we dropped our first song, and that was 5 years ago. 111 songs later, just in Viral Originals, and a few hundred more in the neighborhood of all the other labels that we do. I'm very, very proud today to be here to celebrate. It's almost like musical cinema, right? What we're trying to do, the difference between full-length Bollywood and us is that we try and tell a story in 3.5 minutes, 4 minutes. And for that, you need great music, a great cast who can emote the way you would in a full-length film, and you need a team that sort of brings it all together, right? So I'm very, very pleased to be here. Members of the media, keep pushing this word out into the world that India is so diverse and so full of culture and so rich that it has place for everything. हमारे ये इंडस्ट्री में सिनेमा का जगह हमेशा था, है और हमेशा रहेगा. That's never going to change. This kind of music and storytelling is probably new, but it's going to be here and have an enormously successful world. And of course, then you have short format and all the other new things that sort of are coming the way. So we'll quickly go through it. I don't want to waste much time. I'm dying to show you the video. But before we do any of that, I just also want to say thank you to DCA, because while Karan and I are old friends, the guy who started this company with him, I gave him his first job many, many, many years ago. He's not in the country today, but big shout out to Bunty for actually revolutionizing and creating a platform for real talent that can go across film, as in theatrical, OTT, and the whole world, because that is a brand new world that is waiting to happen. It's already here, but it's going to get bigger and bigger, and I hope the DCA leads from the front on it. And big shout out to my teams, because it's not easy to drop a couple of songs every week, because it's a lot of work. The marketing teams, the PR teams, everyone who comes together, to celebrate music every single day, because for us, music is inside our bloodline. We love it, we thrive on it, we don't know anything else. So thank you for being here once again, and on that note, I'd like to call my good old friend, Mr. Karan Johar. He needs no introduction, but he'll tell us what he thinks about this. Thanks, Devraj, thank you. Devraj has been a really dear friend for very many years, and I do remember that first message that you sent. And from then on, I think Viral Originals has grown from strength to strength, and more power to him, his vision, his team's vision. Universal, the entire family, to all of you, and thank you for being such a solid sound that happens beyond just Hindi film music and Indian film music. And you've done so exceptionally well that I feel really, really proud to see everything. And I wake up proud every morning because I know that you exist in the world of music, so thank you. Today is a special day for many, many reasons. When we started DCA, it was really not just about actors, it was also about venturing into the world of music. And when Bunty, Uday and me, we were jamming along with Apurva, we reached this conclusion that it was very, very critical that we also bring in musical talent to the fore. Music has been such a big part of Indian cinema, has been such a big part of my growing years, has also been such a big part of Dharma Productions and what we stand for. That was critical that we bring in talent in the form of music composers and singers and so many other aspects in the world of music. Laksh was really the first talent we signed on at DCA, and I'll tell you a very tiny little story about how the world of
social media can be of such great help. I have a friend in Toronto. I've known her for very many years, and Iman. And she, of course, is a huge social media follower. And she messaged me and said, you got to check out this boy called Lakshay Kapoor. He sings beautifully. He's not in the mainstream. He's actually a business guy. He's in the world of music. He's got nothing to do with the entertainment industry. And I was like, on a whim, I took her advice and I went onto his page. And I was like, he sings beautifully. He's like a true blues, solid voice that I think can be mainstream, can be popular. And then, damn, he's good looking as well. It works. It becomes like a great. So I thanked him, got in touch with Laksh. Azim Dayani, who heads our music at Dharma Productions, actually nurtured Laksh, and along with them, and thanks to Viral Originals, Universal, Devraj, and his entire team, we stand here today. I'm very grateful to everyone at DCA, to Azim, and of course to the entire team of Viral Originals to actually have produced, curated, created, and conceptualized Tumhe Pyar Karungga. Thank you, Javed and Mohsin, for always being such strong musical forces. To Rashmi Virag for actually penning these beautiful words. And to everyone here present, thank you, members of the media, for actually supporting our endeavor. In the world of music, I think this is a start, and hopefully the first of many more to come. While you're here, I really want to call on Laksh on stage before we show you. And before that, I also want to thank Erica for being such a stunning, stunning part of our video. But Laksh, please come on and join me center stage. This is Lakshay Kapoor, ladies and gentlemen, and I hope that all of you will continue to support him and be a big part of his musical journey. And what are your thoughts? I know you've been really stressed. I am. And he's been setting his hair for the last 3 hours. He's been really tensed and stressed, and I think I'm making him a little more tensed. This is a moment which I'll remember forever. And I still remember the first message from you about the song. And I still remember that he asked me to sing Channa Merya. Yeah. And it was like 2 in the night, and I was just dubbing and recording and sending it like that. And it all started from there. I feel grateful. It's very overwhelming. I'm very nervous. And sorry if my voice shivers, because I am genuinely very nervous. But this is so overwhelming. I want to thank everybody. Thank you from the bottom of my heart, Karan. Thank you, because I am coming from nowhere. It's a town as small as, I don't know, Bandra, or maybe, I don't know, something else. But I am coming from nowhere. Everything is new for me. I am learning a lot. And then Universal joins the hands, and they've given me that confidence, that platform. And we start with the first song, and many more to come. And just thank you so much. And Azim, I don't know if he's there. I think he's left. He always leaves me in the events, but he will never leave me. I know that for a fact. He has groomed me. He has helped me. He's been like a brother, and he's been guiding me, since day one, and bullying me also. But yeah, no. But, I think that what we should do is. Everyone can see our excitement. But I think what we should do is share the video before we get on back on stage. What say, Glenn? Are you ready? Are you ready? All right, thank you. Laksh, we're so proud of you, and we can't wait to see what you've achieved. Thank you, ladies and gentlemen. We'll be right back. Can we please cue the AV? Before we start the Q&A, guys, we have something very special to be done. We've got something very special to be done. All right, a big round of applause, please, ladies and gentlemen. 1, 2, 3, let's go, let's go, let's go. And let's go. Laksh, quickly, Prithvi, can I sit back? Hello, Are you sure? Thanks, bro. Fantastic job done on the track. Like Karan said, good looks, talent, singing, everything all put together. But यार, business और गाना, ये कैसे होगा? ये combination कैसे चल रहा है यार?
Honestly, चला रहा हूँ, but I don't know for how long I can manage both the worlds. But I've been very lucky that way that I am with these people, so I don't have to struggle that much. So Right. I am given that platform where it's very easy for me. Huh. All I have to do is perform good. That's it. And I just hope that I keep on doing that. And it's a tough job, but I like it. But I think you're doing a fantastic job at it. So congratulations and really, really well done. Thank you. Karan, आप में एक amazing skill है वो हीरे को परखने की. How do you always manage to hit it out of the park? I think whether it comes to films, artists, directors, filmmakers, it's on your instinct, right? And I Right. think Devraj will kind of second me on that. It's always an instinct you have when you watch somebody perform, hear them. And it's that first instinct that you have that tells you that this person, this boy, this girl, this particular individual has legs in the entertainment industry. Right. You just go with your instinct. There's no other method. There's no other craft. There's no university you can go to find out where you can borrow that instinct from. It's just a gut feeling. It just comes from your gut. Either it's there. There's a dong that goes from within, and either that dong says yes or it says a big fat no. So. Well said. Thank you very much. आप दोनों को यही मैं पूछूंगा, ये डिंग डोंग तो आपके म्यूजिक में होता ही है और आप लोग तो मैजिक ही क्रिएट करते हो हर बार. पिछली बार भी आप लोगों ने वायरल के साथ एक गाना बनाया था, एंड दैट again was a super duper hit. ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है जावेद साहब, मोहसिन साहब, टू क्रिएट म्यूजिक फॉर अ टीम लाइक दिस? मुझे याद है पिछली बार ही आपने कहा था जब सब एक साथ आते हैं ना और सब एक ही लेवल पर रहते हैं और क्रिएटिव लिबर्टीज आपको मिलती है एज क्रिएटर्स, देन द म्यूजिक रीचेस अ डिफरेंट लेवल. इस बार भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका? First of all, I would like to thank Karan sir for launching our song and always supporting us. And जैसे आपने कहा कि मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि वायरल ओरिजिनल्स आर्टिस्ट को बहुत लिबर्टी देता है, एंड दे बिलीव इन मेलेडी. और बहुत देवराज सर, गौरव भाई, साजिद भाई इज देयर, दे ऑलवेज गिव लिबर्टी, दे ऑलवेज बिलीव इन योर मेलेडी. हमेशा एक नए गाने को, एक नई चीज़ को वो सपोर्ट करते हैं और बहुत हेल्प होती है एक आर्टिस्ट को एक गाना क्रैक करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अजीम. आप दिख रहे नहीं हो लेकिन बट करण सर एंड वायरल, एंड आई वुड लाइक टू शेयर वन एक्सपीरियंस. जब पहली बार हम लोग लक्ष्य को मिले, ठीक है, लक्ष्य बड़ा नर्वस था, हम भी नर्वस थे कि कैसा गाएगा, दिखता तो अच्छा है. अब लक्ष्य भाई आए माइक पे एंड माशाल्लाह ही बहुत अच्छा है. और मैं और मोहसिन अकेले बाहर खड़े हुए सिगरेट पी रहे थे खार के स्टूडियो में, और मैं बोला यार ये लड़का स्टार है. मैंने उस दिन बोला, एंड आई टोल्ड लक्ष्य ऑल्सो, एंड ही इज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब. और हमने भी बहुत दिल से ये गाना बनाया है, बहुत ही दिल से. ये किसी भी कोई भी प्रेमी की, आशिक की ये मतलब प्रेम कहानी है. कभी ना कभी ज़िंदगी में उसके साथ ऐसा होता है, और रश्मि विराग सर ने बहुत अच्छा लिखा है. एंड थैंक यू वंस अगेन करण सर. Also, I would like to tell that this melody, तुम्हें प्यार करूँगा, we cracked it in lockdown. So we were very sure about this melody की एक थोड़ा सा haunting melody थी ये. तो जब हमने अजीम को सुनाई hook line, तो he is like यार it's a beautiful melody, we should work on it. तो हम लोग ने मुखड़ा रेडी किया इसका. Like I told him, मैंने गाएगा कौन? तो like bro लक्ष्य will sing. मतलब लक्ष्य मतलब हमने कभी सुना नहीं है. बोले ब्रो मैं तेरे को भेज रहा हूँ उसके कुछ आवाज़ और उसके कुछ गाने, उसको सुन. एज सून एज ही सेंड इट टू अस, हमने सुना और वी लाइक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस और ये मेलेडी के साथ में 100% जस्टिस करेगा. देन लक्ष्य केम टू आवर स्टूडियो और लक्ष्य इज लाइक कि भाई मैंने कभी स्टूडियो में गाया नहीं है, मैं मेरे होम सेटअप पे ही गाता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ. मतलब लक्ष्य 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 100 दिन लगेगा, बट वी विल डब इट. एंड लक्ष्य इज लाइक भाई आप सपोर्ट 100% सपोर्ट है, बिकॉज वी रियली लव दैट टेक्सचर. कितने दिन लगे? 1 दिन में गा दिया लक्ष्य ने गाना, एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द सॉन्ग. एंड इट टुक जस्ट अ डे एंड लक्ष्य वॉज ऑल डन. इज लाइक भाई हमको और एक बार डब करना, मतलब और एक बार डब करना ही नहीं है, इट्स फाइन. वी सेंड इट टू अजीम, अजीम अप्रूव्ड इट, एंड दैट्स हाउ इट्स हियर. I think sheer magic when all of you all came together.
I think the universe conspired and everything just went absolutely right. When talent meets the right platform, when you meet the right people, सब कुछ सही हो जाता है उसमें. All right, ladies and gentlemen, I'm going to leave this bit for the press to ask your questions. So अगर आपके कोई भी सवाल है, please take the name of your publication or your channel और फिर अपना सवाल पूछें और अपने आप को भी introduce करें. Thank you very much. For you, well, बहुत ही अच्छा गाया है. करण सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा. Well, this is for the first time Dharma is, backing a singer, and we all know कि these days singing is गाने की लाइफ स्पैन बहुत कम हो गई है. Like it do work, लोगों को पसंद आता है, but then it's not like when you have given some amazing songs of your film to this industry which we still सुनते हैं और पसंद भी करते हैं. Well, what do you want to say regarding that? No, I actually don't agree with you because I think music is forever. Even now, I think the music that we are creating in our movies, we'll never know their shelf lives till we live that life. Till we go 2 decades later, I still think we'll be humming some of the melodies of our time. Sometimes nostalgia, retrospect is always, there's so much romanticization of nostalgia that we say, "Arey, us zamane ke gaane kya hua karte the." But I think 40 years later, 4 decades later, maybe we'll be singing Rata Lambiya even then and thinking it's a legendary song. Right. And many songs that all of us collectively have contributed to. So I believe music is forever. Yes, wo melody ka daur jo hua karta tha, I think has been compromised by various technologies in music, but I think there's an audience for that as well. But still, if you hear songs like this, you know that there is faith, that people are still backing good old-fashioned melody, and that can never, you can't associate Indian entertainment without music. So we are here forever. I mean, and I think immortal melodies are being created as we speak, and maybe, as I said, many decades later, we will value what we've created today. Definitely. Since we have one more question. Since we have seen Lakshay in the music video, he has acted so well. Is there any possibilities in, seeing him in Keju's next film? I think Laksh is he has a tunnel vision. I think he wants to create a world for himself, a space for himself in the world of music. It's wonderful that he can actually be the face of his own music. And that will be one of the firsts in the musical entertainment industry. And I think he's quite clear, and I love that clarity, that he's not here to perform and act in movies. He's here to sing, and he's here to be the face of some of his music or all of his music. He's also actually, just to tell you all, he's the playback singer for many of the films that are being made in Dharma Productions, with his beginning in Liger. In fact, one of the most melodic songs of that album was sung by him. That's how his journey began, and now he's singing for so many of our movies. In fact, nearly every film of ours will have a Lakshay Kapoor song, and we're very actually proud of that. Thank you so much. हाय करण, जैसा कि अभी बात हुई, हमारे दोस्त ने भी बातें की कि कमाल की क्वालिटी है आपके अंदर टैलेंट को पहचानने की. जब भी आप किसी को इंडस्ट्री में लाते हैं वो रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं. तो लक्ष्य के अंदर आपने ऐसा क्या कुछ देखा? हमने लाइगर में भी देखा, इन्होंने परफॉर्म किया और उनके गाने लोगों को बहुत पसंद है. ना म्यूजिक वीडियो हम देख रहे हैं, लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल हमें दिख रहा है. तो कैसे आप हीरे की परख कैसे करते हैं? देखिए, ज़्यादा कुछ लगता तो है नहीं, क्योंकि इनकी संगीत जो है, इनकी आवाज़ जो है इतनी मैजिकल है, सुनते ही प्यार सा हो जाता है इनकी आवाज़ से. और फिर ये इनकी खुद की एक पर्सनालिटी है. तो आई थिंक उन दोनों बातों का मिश्रण अगर आप करें तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इनमें वो टैलेंट है, वो पर्सनालिटी है जो बहुत इनको आगे ले जा सकता है इंडियन एंटरटेनमेंट म्यूजिकल इंडस्ट्री में. तो ज़्यादा इंस्टिंक्ट या ज़्यादा ऐसी परख की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने एक बार सुनी उनकी आवाज़ और उनसे कहा कि आप एक गाना मुझे भेज दो दिल से गा के. अजीब बात यह है कि उन्होंने चन्ना मेरेया पे मुझे पहला गाना भेजा और फिर उनका पहला जो वीडियो है वो भी एक तरफा प्यार पे बना है. तो आई थिंक लक्ष्य की जिंदगी में और एक तरफा प्यार और आशिकी का कोई ना कोई तो आई थिंक कॉमनैलिटी है. लक्ष्य, लकी मानते हैं आप कि करण जौहर के ग्रुप में आना, मतलब हमारी इस दुनिया में जितने भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, हर किसी का ये एक सपना होता है कि करण जौहर के साथ में काम करना, उनके ग्रुप में आना. तो आप
लाइगर से हम आपको देख रहे हैं, तो कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके Honestly, लिए? I'll be very honest with you. और मुझे ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि इनके पिताजी और माताश्री फिल्म इंडस्ट्री के नहीं हैं। सिर्फ नाम में कपूर है. जी बिल्कुल. सिर्फ नाम में कपूर है. हाँ, जस्ट कंफ्यूजन शायद होगा ना कि कपूर है, किसी का भी हो सकता है. किसी का भी हो सकता है. कपूर का हो सकता है. करण, एक तरफा प्यार की आप बात कर रहे हो, लगता है ये लकी मस्कट होते जा रहा है आपके लिए. कुछ कुछ होता है, फिर ऐ दिल है मुश्किल, और अब ये एक तरफा प्यार की जो ताकत है वो आपके साथ शायद डिवाइन हो गई है. गुलजार साहब ने क्या कहा है कि प्यार कभी पूरा होता है, उसका पहला अक्षर ही अधूरा होता है. तो आई थिंक कि प्यार जो है वो एक यूनिवर्सल इमोशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्यार, हर इश्क, हर मोहब्बत अपने मकाम तक पहुंचे. और ये हमारे साथ, हम सब के साथ ये हुआ है. ऐसा कोई इंसान ही नहीं जिसने एक तरफा प्यार महसूस ना किया हो. तो आई थिंक ये बहुत ही आइडेंटिफाइबल इमोशन है, और जब भी आप बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे, किसी भी पर्दे पर दर्शाओगे तो आई थिंक इसका कनेक्शन इमीडिएटली आ जाएगा. और करण जौहर वो जौहरी बन गए हैं जो म्यूजिक और टैलेंट की परख रख रहे हैं. हर बार वो 99% का स्ट्राइक रेट कैसे आप क्रिएट कर लेते हैं? आपने तो मुझे त्यानी ज्वेलर बना दिया है. प्लग इन अच्छा कर रहे हो आप. How did you like that? हाँ जी, सॉरी, आपका सवाल क्या था? मैं बस त्यानी की पब्लिसिटी करना मैं चाहता समझ गया, प्लग इन हो रहा है यहाँ पर. हाँ. मैं भी वर्ड प्ले कर रहा था, प्लग इन किया आपका, जौहर से जौहरी. तो वो स्ट्राइक रेट जो है 99% वाला, वो हर बार कैसे क्रिएट कर लेते हो? देखिए, आप अगर आप वाकई शिद्दत से कुछ करोगे तो उसका असर या उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. तो जब भी हम किसी टैलेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो अभी म्यूजिकल टैलेंट क्यों ना हो, या एक्टिंग टैलेंट, या डायरेक्टोरियल टैलेंट, यही कोशिश रहती है कि हम पूरी अपने जोश और जुनून के साथ हम उनको प्रेजेंट करें, और हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. आज लक्ष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, हमारी है, DCA की है, अजीम की है, अभी देवराज की है, हम सब की है. तो ऐसा है कि हमने बोझ उनसे लेकर हम पर डाल दिया है. तो जब ये हो जाता है तो दैट्स व्हाई वी हैव अ पॉइंट टू इवन प्रूव, टू बी पुट ऑल आवर एनर्जीज इनटू क्रिएटिंग द बेस्ट फॉर द टैलेंट. लक्ष्य, पहली बार जब आपको पता चला कि दी करण जौहर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं फॉर द सॉन्ग, व्हाट वाज द रिएक्शन? मैं ऑनेस्टली 15 दिन तक तो अपने इंस्टाग्राम पे वो देखता ही रहा. That when he started following also and or liked a few videos and everything, screenshot ले लेके मैंने रख लिए 15 दिन तक, because अगले दिन मेरे को पता था हुआ है ये सच में. I was overwhelmed, and but the journey was very very smooth, because ऐसा नहीं है कि आते ही it all started and all of that. आकर बहुत प्रिपरेशन भी की है, बहुत डबिंग्स भी की हैं, सब कुछ है. दे ग्रूम्ड मी बेसिकली, एंड अगर वो नहीं होता तो शायद मैं नहीं होता यहाँ तक. और एरिका से क्या सीखने को मिला, क्योंकि वो तो वेटरन हो गई है, अब एक्टिंग में आपसे सीनियर हैं. आपके तो सीनियर हैं. एरिका हैज़ बीन अ सपोर्ट, एंड आई थिंक इफ शी वाजंट देयर तो शायद फर्स्ट म्यूजिक वीडियो में मैं क्या ही करता मुझे पता नहीं था. But because she made the environment so comfortable, and I think we all agree to that, and she was a charm to work with, and I really loved working with her. I mean, it was श्री एरिका फर्नांडिस जी, जरा बताइए आपके वेटरन स्किल्स ने क्या सिखाया हमारे लक्ष्य को, प्लीज जरा. I don't know, he's actually giving me too much credit for it, and I think we just broke the ice in the first time we met, and to be honest, I didn't know he was a singer then, and I did it for Pooja. I did the song for her, and when I heard the song, I looked at him first. When I saw him, I was like, "Acha, ye gata bhi hai." So I heard the song and I was like, no. In a world of auto-tune, seriously, this guy doesn't need it. If you hear him sing, and I am a big, huge fan of Arijit. And I never thought that there was someone who could give him takkar. These guys come. No, trust me. No, trust me. I have loved his songs so much. And I have told him this. The songs that I didn't like, I have told him. The songs that I liked, I have told him. And I've really been honest with my views about them. So it's not that I have put in extra effort to make him feel comfortable or anything, but it's just that we bonded, and that's how this Why turned did you out. break his heart? I didn't. And The to character that. did. Yeah. हेलो The Russian mafia. हेलो मेरा सवाल मोहसिन जावेद से है. आफ्टर राता लंबिया, ऐसे कितने रोज डिमांड आते होंगे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से आपको कि इस तरह का गाना चाहिए,
और इसके बाद आपका करियर किस तरह से बदला है राता लंबिया की सक्सेस के बाद? राता लंबिया वॉज तनिष्क सॉन्ग. हमारा शेरशाह में जो गाना था वो था कभी तुम्हें याद मेरी आए. तो सब उसके बाद में जब ये सेकंड मेलोडी हमने अजीम के साथ में करी थी विच इज़ तुम्हें प्यार करूँगा. तो यही है कि वी ऑलवेज बिलीव इन मेलोडी. हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि गाना कोई भी हो, अगर 6/8 का गाना हो या 4/4 का गाना हो या एक सॉफ्ट बैलेड हो, रोमांटिक बैलेड हो, उसमें मेलोडी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्योंकि मेलोडी लाइक हाउ करण सर सेड कि मेलोडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. कोई भी गाने को एक लंबी जर्नी तक लेके जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मेलोडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. We'll have the last question, please. Last 2 questions, please. Yes. Yes, sir. What is the potential? Here. Since you're, Sorry, I heard the question. I'll answer it. Yeah. I think, the biggest thing forget viral and virality. We make hundreds and hundreds of music videos and great songs across multiple labels every year. After a long time, and it is my personal bugbear, that every time you always have an actor and an actress. It's pretty much the same old problem of Bollywood, where the singer is the playback at the back, and you have, Karan is the master of that. He's made thousands of these. After a long time, we have a song where the actor is also the singer. And a pretty good-looking guy, incredible singer, blessed with the best companies on the planet. That, to me, is the way the world works. विदेश में, वेस्ट में, जस्टिन बीबर के गाने पे कोई आके एक्ट नहीं करता. वो खुद गाता है, वो खुद अपने वीडियो में है और वो खुद, he is the front of it. आप कोई भी मतलब across any world, any language, any country, you take that example. So particularly I am pleased that finally we actually have in the world of music and not in the world of film, an actual music singing star. And I'm saying star because this kid is a star. The first time we saw his rushes, his voice, you need a package. बहुत ज़रूरी होती है, मतलब बहुत कुछ. You need all the stars to align for virality. नहीं तो नहीं होता. You need incredible melody that our two brothers here are absolute superstars at. Unfortunately, Rashmi is not here today. He's away because of some personal issues. The lyrics, the melody, the package, the shooting. If that all comes together in a way like this has, usually, with my little humble experience of a few thousand songs, I can tell you that usually these songs go viral. Hi, this is Suhail here from Ancient Bollywood. Karan and the entire team, big congrats. जैसे टाइटल है तुम्हें प्यार करूँगा. करण, आपने आपके शो में बहुत से लोगों की लव लाइफ के बारे में बहुत सी बातें की है. हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे समथिंग अबाउट योर लव लाइफ. और आपने कभी कहा था तुम्हें प्यार करूँगा, मतलब इन अ रोमांटिक वे टू समवन? नहीं, ये तो apart from being a very personal question, thank you for asking that. And of course, मैं इसीलिए आया हूँ ताकि I could talk about my love life today, and I'd like to take 2 hours of your time. और लेकिन don't mind कि मैं शुरू हो जाऊँ. नहीं, jokes aside, अभी तो खैर कोई love life है नहीं, अभी सिर्फ professional life है. लेकिन maybe fortunately, hopefully the universe conspires. मुझे भी मौका आएगा कि मैं भी ऐसा गाना किसी को गा पाऊंगा. लेकिन hopefully जो end result जो इस वीडियो में हुआ है वो मेरे साथ ना हो, क्योंकि एक तरफा जो खूबसूरत है, बहुत ही दिल पे छूने वाली बात होती है एक तरफा प्यार, लेकिन ना गुजरे तो बेहतर है. नहीं, पर it could be anyway, like it could be in your school, colleges time, ऐसा जरूरी नहीं अभी की बात करना. But any आप मेरे लव लाइफ के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? सर थोड़ा बहुत आप भी तो अभी तो हम आपसे जानते बहुत सारी चीजें आपके शो में. वो सवाल पूछने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं.
सर मैं प्रीमियर कर रहा हूँ। अगर तो इसीलिए वो जब मैं शो करता हूँ वो जो सवाल पूछता हूँ ना तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं मुझे। अब फ्री में ये जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा। I think with this song हम सबको गाएंगे हम आपसे प्यार करते हैं. Thank you very much for your time. अच्छा, one more thing, like, is Dharma trying to get into music also? मतलब maybe if we can just try to think about this. No, I mean we're very clear that we are music creators, but we'll never start a label because we have experts doing that. He already has us. I mean, what does he need to do this for? So we have experts, as I said, sitting right on my right, and I think that we that's something that we've stayed clear from already. Always that we've created music, but we've always offered them to music labels, whoever wishes to take them. Do you think there could be a sequel to this where Erica returns to you because you have a positive title? Well, I really want that. Because actually, I have to say, we were sitting there and Devraj said that it should not be a sequel. It should be 3 songs. And wow. Then, or maybe 4. And there is a part 2 where Erica actually redeems herself. Wow. So we're not waiting for that, ladies and gentlemen. People. But I think, thank you very much for your time. Thank you for all the loveliness. Please give yourselves a big round of applause and thank you for your time and patience. Just once before we sign off and before I exit, I think everyone's here and we're all feel like so connected in the moment. I think it'd be lovely if Lakshay hums a few lines of the song. Yes, let's go for it. See, I'll hum because this was my first song and the way Mohsin bhai has made me dub it. I want you to sing with me. Okay. Come. 100%. Yeah, start. पल भर का नहीं जन्मों का है दुनिया से अलग ये रिश्ता है तुम्हें प्यार करूंगा मैं इतना कोई कर ना सकेगा जितना जो भी था वो कह तो दिया है कुछ तुम भी जरा कह दो ना मुझे इतना यकीन बस दे दो ये प्यार कभी कम होना जो भी था वो कह तो दिया है कुछ तुम भी जरा कह दो ना Amazing. You didn't get the love, you get a hug. Amazing. Thank you, ladies and gentlemen. We're going to have a photo right up. Before we leave, this will be incomplete without you. You guys have made it lovely. Yeah, thanks. It's a video. What is that? Oh, it's a video. Oh, it's a video. What? Bye, darling. See you. It was lovely to see you.
गाने के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि ये गाना सिर्फ एक प्रेमी बना सकता है, तो हमारे दिल में बड़ा प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड जब हमने लक्ष्य की आवाज़ सुनी और लक्ष्य से मिले तो ये गाना और भी ज़्यादा खूबसूरत बन गया। Yes. Actually, the whole experience of the song, when I heard it first, it is very rare that when you hear something for the very first time, वो दिल को छू जाता है. And when that happens, it actually makes the project even more special. And that's why the entire, I keep hearing the song and I never get fed up of it. Thanks. I can never get fed up of it, and I keep humming. I think when I was getting ready also today, I was like, so it was that. That's an amazing compliment. Huh? Thank you, Erika. You're welcome. I feel blessed, overwhelmed, and honestly, I think I have not given the due credit of all this to my brothers Javed and Mohsin bhai. Thank you. अगर इन लोगों ने विश्वास नहीं दिखाया होता तो शायद अभी भी मैं तब सॉन्ग गा रहा होता. And I mean the whole experience is beautiful, and I feel we have many more songs to come. Yes. Many more. Yeah, and I trust me, he's not saying it for the heck of it, because I've heard three names very often during the shoot. Both of you guys and Azim, right? Oh my God! I was like, who are these people? मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी खुशनसीबी है कि हमको लक्ष्य जैसी आवाज़ मिली ये गाने के लिए, बिकॉज ये गाना ये मेलोडी बहुत करीब है हमारे दिल के, और हम हमेशा ये चाहते थे कि जब ये गाना हो, जब हमने अजीम को सुनाया था ये गाना, तो हम चाहते थे कि बहुत प्रॉमिसिंग सिंगर ये मेलोडी के साथ में जस्टिफाई करे. तो जावेद भाई और मैं हमेशा यही डिसाइड करते थे कि ये गाने के लिए ना यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस, एंड लकीली बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमको लक्ष्य की आवाज़ मिली, और लक्ष्य की आवाज़ इतनी खूबसूरत है ये, और इतनी वर्सेटाइल आवाज़ है. ऐसा नहीं है कि लक्ष्य सिर्फ सॉफ्ट बैलेड गा सकता है, लक्ष्य अलग अलग तरीके के गाने गा सकता है. लक्ष्य ने अभी बहुत जल्द हम एक एक थोड़ा सा डिंचैक गाना लक्ष्य डिंचैक बोलता है, एक 6/8 गाना करने वाले हैं, और बहुत जल्द हम थोड़ा सा ब्राइट गाना करने वाले हैं विद कीपिंग द स्ट्रॉन्ग मेलोडी ध्यान में. और लक्ष्य के साथ में बहुत सारे गाने आने वाले हैं, और बहुत अच्छी बात है कि हमारी इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री को इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज़ इंट्रोड्यूस हुई है, और आगे बहुत सारी चीज़ ऐड करना चाहूँगा. मोहसिन से सहमत हूँ. लक्ष्य दिखने में हीरो नहीं लगता, दिखने में तो हीरो लगता ही है, लेकिन इसकी आवाज़ है ना हीरो की आवाज़. ये बॉलीवुड के अंदर है ना, ये बहुत ही तकिया कलाम जैसा है. ये सिंगर की आवाज़ जो है ना, ये हीरो की आवाज़ है. तो माशाल्लाह लक्ष्य, वी आर सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर, एंड लॉन्ग वे टू गो. We both wish both of you and Laksh, very, very best of luck. And thank you Erika for making this song so beautiful. और एरिका ने एक गाने को एक अलग लेवल पर लेके चले गई है with her presence, and the way she has acted. It's very easy, it's very easy because it's a simple melody, and Erika ने वो simplicity maintain करते हुए story line को इतना strong अडेप्ट करके बहुत अच्छे तरीके से किया. तो थैंक यू सो मच एरिका फॉर दिस. It's my pleasure. Thank you. Yes. चलो हो जाए. हाँ, अरे तो 2 दर्जन माइक पकड़ के खड़ा है भाई, पानी वानी पीना. अब शुरुआत करेंगे मौसिम भाई. दूर कहीं पे मैं लेके चलूं तुमको, और वहीं पे मैं छू के कहूं तुमको, पल भर का नहीं जन्मों का है, दुनिया से अलग ये रिश्ता है. तुम्हें प्यार करूंगा मैं इतना, कोई कर ना सकेगा जितना, जो भी था वो कह तो दिया है, कुछ तुम भी जरा कह दो ना. जानू हमने काम, मुझे नहीं लगता हमने काम किया, हमने सिर्फ अच्छे मज़े से हमने शूट कर दिया पूरा सॉन्ग.
तो ऐसा दैट वाज द एक्सपीरियंस इन टोटलिटी. भाई इसको जब पहले दिन मिला ना, मैंने इसको बोल दिया था, मैं बोला तू ये डेट और टाइम लिख ले, तू स्टार है और इंशाल्लाह स्टार बनेगा. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब पहले दिन मैंने डब किया था, जावेद भाई केम टू मी और कुछ मेरी पॉकेट में शगन डाल के गए थे. ही वाज सो हैप्पी. आई मीन इससे बड़ी चीज़ शायद सिंगर के लिए कुछ हो ही नहीं सकती. दिल से पसंद है. लव यू ब्रो. he's genuinely a very nice human being. क्या होता है, एक अच्छा सिंगर के लिए ना एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपकी आवाज़ है वो आपकी आवाज़ रिफ्लेक्ट करती है आपके कैरेक्टर को. तो जो अगर अंदर से इंसान अगर खूबसूरत होगा तो उसकी आवाज़ ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी. और लक्ष्य की आवाज़ सामने है, लक्ष्य सबके सामने है. थैंक यू सो मच. यही दुआई अपना लक्ष्य प्राप्त करे. थैंक यू. और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों का. थैंक यू सो मच. इसको बम ब्लास्ट कर दीजिए.